So, e-library session on strategy. Now, one common mistake is too much focus on current. This too much focus on current, where will it fetch you marks? Current comes in which paper? GS2 and 3. Yes, GS2 and GS3, that too also in parts. Because Yes. there are various parts in GS2 and 3 which are static. If you ask me, I see current only as an extension of static and not a question in itself. Current is just an extension. We have to utilize the current. Very rarely it is a purely current based question. For example, कभी arbitration and reconciliation act के provision पूछ लिए. So that is a purely current based question. Otherwise, UPSC generally extends the static and asks through current. It wants to ask you something from your static part, linking it with the current. So entire focus is on completing economics current, completing governance issues, completing social issues. From current, that is what where we spend our time on, whereas very less time is spent on three pillars. The three pillars of success in this exam, that is optional, essay and ethics. तो ये जो तीन पिलर हैं, ये these seem seemingly लेस हार्मफुल टू यू. ऐसा लगता है कि क्योंकि इनका आपसे रोज कोई टेस्ट होना नहीं है. योर सक्सेस एंड फेलियर इन ऑप्शनल एथिक्स, it does not happen daily. Your success in current affairs happens daily और your failure in current affairs happens daily. कोई MCQ कर रहे होंगे, उसमें करंट का क्वेश्चन आ गया. कोई न्यूज देख रहे थे, उसमें करंट का क्वेश्चन आ गया. किसी क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते थे, करंट का मेंशन कर देंगे. यू विल फील कि मैंने कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है. वेरेज ये ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स है जो you will not be pointed out that this is your holy grail. ये आपका this is going to be your Waterloo, all battle examples. यहाँ पर जाके आपकी जो गाड़ी है फंसने वाली है, ये पता नहीं लग पाता. एंड वी कीप डूइंग इट एट आवर ओन पेस एंड परहैप्स नो पेस. तो पहली बात तो all of you make an adjustment in your strategies, give them ample time, especially right now before we venture into prelims mode. इन तीनों को जितना खींच सकते हैं खींचिए. एसए के लिए बाद में कभी कोई समय नहीं आता, मेंस के बाद स्पेशली नहीं आएगा. मेंस के बाद यू विल हैव, after your prelims you will have a lot of burden, different kinds of burden during your mains 3 months preparation. Now third issue, which happens on a 15-day strategy, which happens in a 1-day strategy, which happens in the year long strategy. Too much focus on reading. पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नया सब्जेक्ट, नई बुक, नया सोर्स. When you are reading it and if you are able to understand it, you find it very, very interesting to read. And perhaps because it is the easiest part also. Whereas reading is just one part. It is just the starting point. Why is it the starting point? क्योंकि reading करने के बाद सब, generally your reading source is bulky. आप अगर एक बुक पढ़ रहे होंगे तो वो 300 या 400 पेजेस की है. आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो 100 या 150 पेजेस का है. आप करंट अफेयर्स की एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, इट इज 100 पेजेस. नाउ वंस यू रीड दोज 100 पेजेस, very soon the next 100 pages will come. So this has to be carried till your mains. What can we do to carry these 100, 200, 400, 300 pages?
ऑब्वियसली वी कैनॉट रीड देम अगेन, उतना टाइम होगा नहीं हमारे पास, तो हम रीडिंग के साथ क्या कर रहे होंगे, नोट मेकिंग। नाउ इट डज नॉट मीन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, एक हम अलग सेशन लेंगे नोट मेकिंग पे ही, बिकॉज मेनी ऑफ यू मेक नोट्स ऑफ व्हाट यू शुड नॉट। आप लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाते हैं, स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाते हैं, आप विपिन चंद्रा एनसीईआरटी का नोट्स बनाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। नोट मेकिंग हम बनाते हैं ऐसी चीजों का विच इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर, बट किसी ने अगर नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर करी तो फॉर गॉड सेक जस्ट टेक आउट सम नोट्स फ्रॉम दैट विच यू कैन रिवाइज लेटर, क्योंकि वो बुक दोबारा खुलेगी नहीं, एक बार कंप्लीट नहीं होगी दोबारा खुलेगी नहीं। बट दिस आई एम टॉकिंग स्पेशली इन मेंस पर्सपेक्टिव इन योर डेली रूटीन, whether be it your optional, be it GS, be it ethics, उसमें notes making करना ही करना है। In your case, some of you who are in the EMP Excel mains through PYQ course, we make this work easy. Because that topic, either it is given to you in the class itself, you are made to write it, or it is given to you in the form of printed notes. तो वो आपके लिए नोट मेकिंग का काम कर जाती है। इट ईएमपी का पर्पस ही यही है, to get you from here to here. So first step, make reading and note making as part of your daily routine. अब note making पे बात खत्म नहीं हो जाती है। Many of us will have very good, very elaborate notes. Sometimes the note making will be rivaling the book itself, है ना। किताब थी 100 पेज की और आपने 120 पेजेस का इंटरनेट के मदद से नोट्स बना लिए। Again, your notes have already crippled you. Rather than being a support system, they have crippled you. तो notes जो हैं they should be precise. Their aim is not, first of all, note making, don't make it out of fear कि सब कुछ लिखना है. Don't consider your brain to be useless or dumb. It remembers many things. Note making सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग को स्ट्रक्चर याद रहे, जो उसने पढ़ा है वो वापस लिखते समय याद रह जाए। प्लस व्हेन यू वांट टू कम बैक लेटर टू इट, यू कैन रिमाइंड योर ब्रेन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू दिस नोट्स। बट अगर आप उसको पूरी चीजें दोबारा दिखाएंगे, इट विल रिफ्यूज टू टेक इट। वो बोलेगा भाई मैंने पहले भी देखा था पूरा, ये क्यों बनाया फिर, लेट मी रीड इट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। अगर जिसको ये बात नहीं समझ आ रही है, तो आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी बहुत ही बल्कि सोर्स का नोट्स बनाना स्टार्ट किया, बहुत प्रॉपर नोट्स बनाने लग गए, नोट्स भी बल्कि होने लग गए। नाउ व्हेन यू केम टू रिवाइज, यू आर कॉन्फ्लिक्टेड कि मैं बुक से रिवाइज करूं कि नोट से रिवाइज करूं। ऐसा किसी के साथ हुआ? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर नोट्स यू हैड टू गो बैक टू द बुक अगेन। बताइए। Yes, sir. अब ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू आवर डेली पार्ट। सो रीडिंग, नोट मेकिंग, evaluation. Now evaluation can be in the form of answer writing, which is your mains preparation, or PYQs, sorry MCQs. यहाँ पर PYQ लिखिए मेंस के लिए और MCQ करिए प्रीलिम्स के लिए, so that you can check whatever you have read in the day वो आपको आया भी कि नहीं आया। उससे क्या होगा, you will apply what you have read and made notes of in the form of answer writing, which is actually the deliverable thing in this exam. ये प्रोसेस यहाँ जाके कंप्लीट होता है एग्जाम में। एग्जाम में यूपीएससी आपका नोट्स नहीं चेक करती कि कैसा बना है, वहां कोई वाइवा या प्रोजेक्ट नहीं है कि आप अपनी कॉपी जमा करेंगे एंड यूपीएससी विल राइट वेरी गुड नोट्स, वेरी वेल रिसर्च्ड। नो, इट विल जज ओनली ऑन the answer writing or the structuring of your answer, the content of your answer, the level of interlinking in your answers, dimensions, etc. So you should be testing yourself every day. For example, write one answer every day and
This also happens in your EMP. At least 1 or 2 answers you write per topic in EMP. तो I know ये part करना difficult है. As students we never do it or not do it consistently. So partly it is being helped in EMP, but EMP आपको कुछ ही आंसर लिखवा सकता है. If we have taught you 10 topics, we will make you write one topic on those, तो 10 answers हो गए. It is up to you to write the next 20 answers. That will increase your confidence. Plus MCQs, you have the daily practice test. तो यहाँ तो आपको टेंशन नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. ये आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट देते ही हैं पोर्टल पे. इवन इन ई लाइब्रेरी टाइम एंड अगेन वी गिव यू द डेली प्रैक्टिस टेस्ट. कोशिश ये करेंगे कि पहले आपको टॉपिक बता दे, सो दैट those of you who are not aware can study that topic and then give the daily practice test. Okay, so reading, note making, evaluation, value addition. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट रीडिंग में और फर्स्ट नोट मेकिंग में यू विल कवर एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट सन, सॉरी प्लैनेट अर्थ. कुछ चीजें होंगी जो आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिलेंगी. हमारा पर्पस भी एमसीक्यू में यही रहता है कि अगर आपने शंकर गणेश और एनसीईआरटी से करा है तो 1-2 सवाल हम किसी और बुक से दे दे, किसी और कॉन्सेप्ट से दे दे जो उन बुक में कम एक्सप्लेन्ड है, फॉर द वेरी रीजन कि आपका वो पार्ट भी क्वेश्चन के थ्रू हो जाए. सो एमसीक्यूज का पर्पस सिर्फ यही नहीं है दैट यू सॉल्व एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग. इट इज ऑल्सो टू गिव यू न्यू नॉलेज, to give you some additional knowledge which may be not covered in your source. तो वो हमने वैल्यू एडिशन करा वापस से यहाँ पे. We will not go in this route now, reading the bulky source. So please fix this cycle: reading, note making, evaluation, value addition. Do not just do reading in the entire day. Now I know you will not admit to me right now, but all that you do in the entire day or most part of your entire day goes into reading, right? बहुत जबरदस्ती आपसे लिखने के लिए समय निकलवाया जाता है ना, या एमसीक्यू पोर्टल पे देके आपसे सॉल्व करवाया जाता है. यस और नो? Yes, sir. So please make this third correction. Okay, first, do not focus too much on current in your daily schedule, because your daily school schedule is what your preparation strategy is. अगर रोज में आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम that will become your preparation fault. So if I spend 4 hours, 5 hours reading the newspaper, where do I have the time to do other things? So don't focus too much on current. There are precision videos, precision notes, इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, उनका हैंड आउट लीजिए, समाचार वाणी प्लस के पीडीएफ देखिए, जहां से भी मदद मिले टू डू दैट करंट पार्ट इन वेरी कंसाइज थिंग. Do that in concise format. Focus on optional essay and ethics, and do not focus too much on reading. Now, anybody जिसने अभी तक कोई प्लानर नहीं बनवाया है मेरे से, और who does not know what a planner is, कि टारगेट बना के 15 दिन के लिए कैसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, आप किसी सब्जेक्ट के लिए बता दीजिए. ऐसे कोई है? Yes, sir. Okay, so which subject do you want the planner for? Polity, sir. Polity. तो पहली चीज तो हम तय करते हैं कि पॉलिटी प्री की बात कर रही हैं आप, पॉलिटी मेंस की, या पॉलिटी प्री का मेंस इंटीग्रेटेड. देयर आर 3 पिलर्स. एक पॉलिटी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, एक पॉलिटी मेंस का प्रिपरेशन है, एक पॉलिटी इंटीग्रेटेड की प्रिपरेशन है. प्रेफरेबली एंड मोस्ट सुटेबली ऑल माय प्लानर्स आर हैविंग दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच कि पॉलिटी प्री और मेंस को करें, क्योंकि बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम ये सेग्रीगेशन कर सकते हैं. बुक्स के लेवल पे तो सेग्रीगेशन हो जाता है, जैसे कि मैं आपको कह दूं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, बट बेटर होगा कि आप लक्ष्मीकांत के साथ साथ पॉलिटी का मेंस भी पढ़िए, बिकॉज लक्ष्मीकांत फॉर मेंस
it is less useful, but definitely it will be building your base for mains. तो दोनों को अलग अलग, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट के लिए कैनॉट बी सेग्रीगेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री कैनॉट बी सेग्रीगेटेड, इंपॉर्टेंस कम ज्यादा हो सकती है. फॉर एग्जांपल इन मेंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड आर 4-5 इन नंबर, तो दे विल बी आस्किंग ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में वो पूछ देंगे गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, दे विल आस्क अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडिया, एग्रीकल्चर पे हो, इंडस्ट्री पे हो, और फ्रीडम मूवमेंट के कोई एस्पेक्ट को पूछ देंगे. तो मेंस के समय हम उसी स्पेक्ट्रम को पढ़ने का अप्रोच चेंज कर देते हैं. वी रीड दैट स्पेक्ट्रम और दैट लक्ष्मीकांत और दैट प्रीलिम स्पेसिफिक मटेरियल in a different way. Okay, so do you want it for prelims or mains or integrated? Sir, integrated. Integrated. So first of all, let us decide the sources. Prelims के लिए obviously Lakshmikant, it is an important source. More importantly, लक्ष्मीकांत को हर बार आपको पढ़ने पे लगेगा you are gaining something new. How can we make Lakshmikant as if Lakshmikant becomes a very ridiculously easy book? Those of you who are in my polity class last year या EMP में भी आपने देखा होगा, we do PM बख्शी. PM बख्शी करने के बाद कितने लोगों के लिए लक्ष्मीकांत becomes a cakewalk? The cakewalk, but yes, it is comparatively easy. हाँ, not a cakewalk as in cakewalk after doing it couple of times. Like if when I did PM Bakshi in my first attempt, PM Bakshi and Lakshmikant, by my third attempt, I could do Lakshmikant in 3 days. Yes, my So- law paper became cakewalk after that. Law paper, okay. See, the idea is that Lakshmikant should not be a puzzle for you. Many times लक्ष्मीकांत को पढ़ने में और लक्ष्मीकांत को पढ़ के उसके थ्रू यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने में देयर इज अ ह्यूज गैप. अगर सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ के सॉल्व हो रहा होता तो मैं सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत बोल देता. बट इफ यू हैव गिवन द अटेम्प्ट, यू नो कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के, ऑल्दो क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, 19 में से 12, 13, 14 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से होंगे, 12, 13. बट कैन वी ऑल्सो से कि लक्ष्मीकांत पढ़ के वो मैं 12, 13 क्वेश्चन सही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? द रीजन बीइंग कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसको सप्लीमेंट करना है टू सॉल्व क्वेश्चंस. लक्ष्मीकांत may give you that factual information, that topic may be covered, बट उसको क्वेश्चन में सही करके आ जाने के लिए we need some additional things. One thing is PM Bakshi, especially PM Bakshi के लिए we have already done a video how to read PM Bakshi. So if you have not read PM Bakshi ever, I will recommend to watch that video. It is on our channel. स्पेशली आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक तो लक्ष्मीकांत PM बख्शी से देख लीजिएगा आप. The articles that cover the union and territory, citizenship, fundamental rights, fundamental duties and directive principles and state policies and fundamental duties 51A tak. There are several other articles that I have mentioned which are important and which I have demonstrated also why they are important in this video. इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए 2 NCERTs. Constitution at Work, our Constitution at Work, 11th class, and Political Theory, both 11th class. इनको करने के लिए, क्योंकि आजकल जो एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव वैसे है नहीं वो, मतलब from the perspective of Lakshmikant it is subjective. For example, they ask what is the relation between law and liberty. अब ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं हो. Which of these best protects liberty?
उसमें आंसर था कमिटेड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये वो. अगेन that would require you to understand the meaning of liberty itself. In Lakshmikant, liberty is explained in your preamble chapter, but बहुत अच्छे से explain नहीं किया है. Very weak explanation, especially of liberty, equality, justice. इनका explanation proper नहीं है उस chapter में. UPSC utilizes this weakness, asks question on these concepts for you to make error. जो preamble का chapter है उसमें ये terms को explain किया गया है, but this has not been dealt that much in detail. You will find that here. Okay. And constitution at work, this will also be helping you. For example, it has various definitions. Rights क्या होते हैं? There was a question asked by UPSC, very simple question: what is the relation between rights and duties? And I know many people who made mistake. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम गलती ना करें. Okay, so this is your source for prelims. For mains, so far, how have you done your mains for polity? Because right now we are standing in November 18th or 17th. So I will have to restrict your sources for mains. So polity mains booklet, we will be putting it in the video also, so that many people who don't have access to this PDF, they can get access and they can read the polity mains, because there is very difficult compiled source for polity mains. Okay, so now coming back to your daily planner, my question was that, are you a working aspirant or are you studying full time? 1 month you're not working. So how many hours are you putting up every day? I mean it, can you put every day? Sir, 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Okay. So I was making, and that is why I was asking ki aap working hai ki non working hai, and I got no response. So I thought maybe you don't want to reveal your Twitter employment status. So we will make this again. There's a very famous line: you can't become rich by hating the rich. That I find it to be well demonstrated on Twitter. You say a lot of things to Elon Musk, you take out your anger. फायदा किसका हो रहा है? Which platform is growing? Twitter itself. Yes. And he is the owner. So now every day there is doomsday. आज Twitter बंद हो जाएगा, रात को खत्म हो जाएगा, लोग चले गए हैं, ये है वो है. He is just correcting the work culture. लोग आते नहीं थे, घर से काम करते थे, 1-2 घंटे का काम था पूरे दिन में. That platform was working with a over bloated staff. Nobody was bothered, and he's correcting things. Obviously there will be problem in that. So anyways, so now with an 8 to 9 hours study schedule, number one, because you asked me for GS, polity and mains. So out of these 9 hours, 3 hours you are spending here, nearly 33%. In this, other than the reading time, you will be taking out 30 to 45 minutes for writing. "30 to 45 minutes for writing" means that you will be writing, if you revise your EMP notes, write 1 PYQ answer or 2 PYQ answers. Plus MCQ के लिए समय निकालिए 15 minutes. This is additional to the 3 hours. इसके अलावा 15 मिनट MCQ के लिए टाइम निकालिए. When you are, for example, suppose आपका पढ़ने का प्लान था 12 बजे से 2 बजे तक, तो आप 2 बजे जो है 15 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, MCQ सॉल्व कर लीजिए. You will be utilizing that time
MCQs ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, that is what will make the difference. So once you are ending with, suppose your 2 hour sitting, just take MCQs and solve during that period. You will find that to be rejuvenating also. Okay, so 15 minutes for MCQ plus 30 minutes it will take for you to correct your MCQs, जो गलतियां हुई होंगी या उसका वो पढ़ने के लिए, solution पढ़ने के लिए. So reading time I am putting is around 2 hours to 2.5 hours. Writing time is 30 to 45 minutes and MCQs 15 minutes for MCQs. Additional आप 30 मिनट देंगे MCQ को रिवाइज करने के लिए. Second bulk you will be spending 3 hours on your optional. For 3 hours of your optional. Here also spend compulsorily not 30, 45 minutes on writing, जिसमें आपका नोट्स हो सकता है और 1 PYQ आंसर एवरी डे. Okay, you can extend this time to 4 hours also depending on the level of optional preparation you are at. अगर ऑप्शनल आपका बहुत सारा रह रहा है तो आप इसको बढ़ा के 4 घंटे भी कर सकती हैं. उसमें प्रोपोर्शनेटली आप अपना राइटिंग टाइम बढ़ा दीजिए, नोट मेकिंग टाइम बढ़ा दीजिए. PYQ एक रोज लिखना ही लिखना है आपको, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टैंड इन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. नाउ थर्ड पार्ट इज essay writing. So this 9 hour that you say, does it include the class timings? No, sir. Excluding class. Okay. So we are considering 3 and 4, 7 hours gone. We have 2 hours. So essay writing के लिए, if not every day, at least once a week, you spend 1 hour to 3 hours. 3 hours once a week, 1 hour twice a week or thrice a week, at least on essay writing, where you, if you are not writing one complete essay, you brainstorm on the essay topics. essay के बिना तो देखिए पार नहीं होगा. जितना ऑप्शनल जरूरी है उतना ही essay जरूरी है. essay में मार्क्स का फ्लक्चुएशन जो है 60 मार्क्स का है. People get 90 also, people get 150 also, 157 also, some people. So there is a huge fluctuation and these 50-60 marks will throw you out of the game. So don't take it casually. ये लास्ट के मोमेंट पे करने वाली चीज नहीं है. Essay has to be practiced. जितना प्रैक्टिस अच्छा होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना अच्छा आप ऐसे लिखेंगे. ओवरनाइट 4 ऐसे लिख के कोई अच्छा ऐसे नहीं लिख सकता. It will be a risky affair and a gamble that you will take in your mains paper if you prepare essay in an unorganized way. तो essay पे brainstorming कीजिए, बच जाता है आपके पास current affairs के लिए टाइम. So you spend 45 minutes on current affairs, 45 minutes read from any compilation. जैसे आपको समाचार वाणी प्लस के नोट्स मिले हैं, विजन का नोट्स है, इनसाइट XYZ एनी नोट्स दैट यू लाइक विच यू आर कंफर्टेबल विथ, वो कंपाइलेशन मान लीजिए वीकली. सपोज दिस वीक आई सॉ इट इज फॉर 36 पेजेस. सो यू डिवाइड एवरी वीक इट इज कमिंग, सो इट इज कमिंग एवरी 7th डे. आपके पास 6 दिन है, ये 36 पेजेस को आपको डिवाइड करना है. सो यू हैव टू रीड 6 पेजेस एवरी डे. So you read 6 pages every day. Try to concise it into 1 page notes. Plus समाचार वाणी प्लस में आपको एक आंसर भी लिखने को मिलता है. So write that one answer. जो रोज के शेड्यूल में हो जाए उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी. एंड प्लीज अगर आप लोगों में से जो लोग ये डिसिप्लिन लेके आ पाए कि मैं ये रोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ लाइक अ रोबोट, if you are able to do it on a daily basis, no force can stop you from clearing this exam.
only if you are able to do this on a daily basis. Okay, so current affairs 45 minutes you are doing, you are reading it, and maybe 15 minutes you can spend on answer writing. 1 or 2 answers you spend. Okay, iske additional, ab in case you are exhausted, so how do we utilize time in case of exhaustion? There are few things which rejuvenate us. For example, CSAT. जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स भी आता है, सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, मैपिंग कर लीजिए. दिस इज फॉर दैट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टडीज विच विल गो बियॉन्ड व्हाट योर माइंड हैज गिवन अप. अच्छा ठीक है, आज 7 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, अब इसके बाद 2 घंटे की क्लास है, अब और 1 घंटा जो बचा है वो नहीं करना है. उस दौरान आप क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू रिजुविनेट योरसेल्फ बाय डूइंग दीज थिंग्स? सीसैट, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, और यूट्यूब, ट्विटर डिस्कशंस. कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, अब उसमें पैनलिस्ट देख लीजिए. जरूरी नहीं है कि वो संसद टीवी पे हो तो ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि संसद टीवी वाले यू विल गेट बोर्ड, यू विल नॉट लिसन. सो इवन व्हेन यू आर वाचिंग अ controversial debate, let's say with Subramaniam Swamy and Justice Markande Kadzu, at least one person among them is useless, but in his 4 or 5 things he will give you one legal perspective. So you take that legal perspective, plus आपको वो enjoy होगा, it will not be a burden for you. So daily कुछ ना कुछ debate में होगा. Did Savarkar apologize? Now this may seem for UPSC to be a ridiculous topic. Okay, but again कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आएंगी जो आपको सच टॉपिक्स में हेल्प. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी ने, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ nationalist leaders in the freedom struggle, you will get one more perspective, Veer Savarkar. Okay, so I intentionally I am saying because these discussions helped me a lot in my preparation, in understanding even polity, etc. So I saw a lot of debates on CA while I had to teach. So I saw फैजान मुस्तफा क्या कह रहे हैं, what is his perspective, where his perspective is coming from, especially debates of Dr. S. Jaishankar, like his speeches in foreign policy, etc. ऐसी चीजों को देखिए. Okay, so this is your division of time. Your detailed planner, I'm just showing you on mail. So this is your planner, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Okay, it includes the NCERT that you have to study. It includes Lakshmikant se same chapter and PM Bakshi 5 articles every day, and you just make a note of those 5 articles. You have to follow that. Current affairs ke liye, if you have any classes to watch which is backlog, or if you are reading from whichever source, you watch in this current affairs timing. First 2 days we give to any student to settle in their plan. Okay, so I will be mailing this plan to you on your mail ID. This covers your political science plus EMP revision. It covers the sources are mentioned: NCERT, Political Theory and Indian Constitution at Work, Lakshmikant, PM Bakshi, Current Affairs, MCQ, and your optional. And day wise, there is the planner. There is from your day 4, you have MCQ timing also mentioned, so that you can test yourself. I would recommend to start from day 1 itself, because you have already studied polity in the past. Okay, so day 5 is for revision. Now you can go through the planner, and if there is any doubt, you can get back to us. Okay. Okay, sir. Anybody else having any doubt in their planner in general? We have 5 minutes to end this session. बाकी किसी को प्लानर में कुछ डाउट या इन जनरल कोई डाउट? Okay, in that case, thank you for your time and patience.
Next session we will be concluding for some other people coming up with some other things. Okay.